Hello friends, welcome to the Siddharth classes. Today we'll study the same chapter from 10th History, Nationalism in India. And today we'll study the unit 4, the sense of collective belongingness. In this unit we will study how the different communities, regions and language group develop a sense of collective belongingness. It means that India is a vast country. There is a lot of diversity in geographical, cultural, language, religions. So it was really difficult to unite a lot of varieties and a lot of different communities in in one unit. It was really difficult. Sometimes हम हमारे क्लासरूम में we students see that we are not able to come come at a conclusions if we ask about that. मतलब किसी भी टॉपिक पर हम रैंडमली रेफरेंडम करते हैं तो हम एक टॉपिक पर नहीं आ पाते. अब इतने बड़ी कंट्री को यूनिफाई करना इट वाज नॉट सो इजी टास्क. सो इन हाफ चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द मूवमेंट्स, रैलीज, हड़ताल्स, कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स हमने देखे, सत्याग्रह देखा. लेकिन कुछ अलग मूवमेंट्स भी एग्जिस्ट करते थे. दे यूनिफाइड द पीपल्स. द अदर मीन्स, व्हाट वर दीज अदर मीन्स? So these were the like the literatures, the symbols, icons, songs, flags. So we'll study in this unit about all these. So it was the 20th century. With the growth of nationalism, the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. I'll explain this. Means you just think like this. Suppose you have an idea about a painting. When this idea is exist in your mind, it is called abstract idea. मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है. इट इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. बट वंस यू पेंटेड इट ऑन द पोर्ट्रेट, एक आप इसको पेंट कर देते हैं बाहर, तो नाउ इट इज़ ए कॉन्क्रीट आइडिया. एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट मीन्स अगर हम उसको थोड़ा सा समझें तो एक आइडिया को समझना इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, है ना. और एक जो कॉन्क्रीट फॉर्म में हमारे सामने कुछ रखा होता है ना, वी कैन सी इट, वी कैन टच इट. सो इट क्रिएट some idea, thought, creativity in our mind. Like if you have not, for an example, you have not seen the Taj Mahal, so better there is a two ways. One, I explain everything like as a white marble. It is made by the white marble. It's so big, looks beautiful. और एक मैं उसका छोटा सा मिनिएचर मॉडल्स आई प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसे दिखा दूँ कि देखो ऐसा होता है, तो ये कॉन्क्रीट आइडिया बन जाता है. वी कैन अंडरस्टैंड ईजीली. तो द सेम वे द nationalists try to create concrete idea about the nations so that a feeling of nationalism can be created. So उन्होंने भारत माता को एक विजुअल फॉर्म दे दिया, एक कॉन्क्रीट फॉर्म दे दिया. Here the author tried to explain this. The image was first created by the Bankim Chandra Chattopadhyay, and the first image was created by Bankim Chandra Chattopadhyay. Now, in the 1870, he wrote, the Bankim Chandra Chattopadhyay wrote a hymns song, or you can say a hymn मतलब एक song की तरह ही होता है, the Vande Mataram to the motherland. और बाद में द सेइंग दिस सॉन्ग वंदे मातरम इज कंक्लूड इन हिज नोवेल द आनंद मठ. बाद में वो इस वंदे मातरम को ना उस नोवेल के अंदर ही ऐड कर देते हैं. एंड लेटर दिस सॉन्ग वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. ये बहुत गाया जाता है बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट के दौरान. एंड लेटर द अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड द सेम इमेज ऑफ भारत माता. देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. ही क्रिएटेड इमेज एंड अवनींद्रनाथ पेंटिंग इमेज ऑफ भारत माता. एंड जो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी भारत माता की, इट पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर, मतलब बिल्कुल संत लाइक.
she is calm, composed, divine and spiritual. मतलब बहुत पीसफुल लगती थी हमारी भारत माता. You can see in this image. This was the image created by the Abanindranath Tagore. Okay. So now, so why did we create this image? Just for the devotion, so that the peoples can be devoted towards their nations. कि जो लोग हैं वो अपने नेशंस के प्रति थोड़े से डिवोटेड हो जाएं. क्योंकि अब हम एक नारा लगाना है, भारत माता की जय. तो अब हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है भारत माता की. बट बिफोर दिस इमेज और द विजुअल इमेज, इट वाज रियली डिफ़िकल्ट कि हम क्या कर रहे हैं. तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग द डिवोशंस टूवर्ड्स द नेशंस. दिस इज़ द रीजन्स वी क्रिएटेड द विजुअल इमेज ऑफ द Bharat Mata. The idea of the nationalisms also developed through a movement to revive the Indian folklores. ठीक है. तो फर्स्ट वे वाज टू क्रिएट द सिंबल्स. सिंबल क्रिएट किया. एंड सेकंड है ना, टू रिवाइव द फोकलर्स. फोकलर्स, व्हाट डज फोकलर मीन्स? द फोकलर्स आर द लोकल आर्टिस्ट, लोकल सिंगर, लोकल डांसर, लोकल पोइट राइटर. मतलब लोक नृत्य सुना है आपने, जैसे लोकगीत भी सुना होगा. तो सेम वे द फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, लोक कथाएं. तो ये सब जो, इन सब को जो रिवाइव करते हैं, जो लोकल हमारे आर्टिस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं फोकलर्स. सो द नेशनलिस्ट वांटेड टू क्रिएट द मोर फोकलर्स बिकॉज इट वाज easy way to communicate with the peoples who are illiterate, or living outside or the countrysides. मतलब जो गांव में रह रहे हैं उनके साथ, it was the easiest way to communicate with them, because that times we didn't have the so much electronic media. And so that, and the literacy rate was really low. So these things could create the sense of collectiveness easily. So उन्होंने इनको रिवाइव करने की सोची, और उसमें उन्होंने कुछ अच्छा होमवर्क भी किया इनके ऊपर. दे द नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग द फोक टेल्स संग बाई द बार्ड्स. मतलब जो भी हमारे फोकलर्स थे, उन्होंने जो भी जैसे हर गांव में जाओगे तो हर गांव की एक अपनी बहादुरी के किस्से होते हैं, स्टोरीज होती हैं कि हमारे ग्रैंड फादर थे, ही डिड दैट, ही डिड दिस दैट, a lot of stories you can find in the village or the countryside. तो उन्होंने उन सबको कलेक्ट करने की कोशिश करी की, जो इकट्ठी थी, जो अच्छी अच्छी स्टोरीज थी. उसके लिए क्या हुआ था कि बहुत से लोगों ने गांव गांव घूमे, टूर किए. दे टूर्ड विलेज टुगेदर द फोक सॉन्ग्स एंड द लेजेंड्स. तो इन्हीं में दीज टेल्स दे बिलीव्ड गिव ए ट्रू पिक्चर्स ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर्स दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय द आउटसाइड फोर्स. मतलब ये था कि हमारे इंडिया के अंदर जो ये द फोक टेल्स थी, द फोक स्टोरीज थी, ये काफ़ी फेमस थी. और थोड़ी सी मतलब वो वी कैन से दैट दीज वर द वेरी नॉलेजेबल्स एंड कैन गिव्स अस ए लॉट ऑफ पिक्चर्स अबाउट आवर फ्यूचर्स. सो ऐसा कुछ था. बट द फॉरेनर्स हु इन्वेडेड अस, दे डिस्ट्रॉय दिस कल्चर्स. तो बंगाल में भी, इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग द बैलेड्स and nursery rhymes, myths, and led the movement for folk revivals. मतलब we can say that the Rabindranath Tagore had done a lot of good work to revive the folklores. In Madras, Natesa Sastri published a massive 4 volumes collect the Tamil folk tales, द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया. मतलब ये उन्होंने 4 वॉल्यूम निकाले मद्रास के अंदर. शी वॉज द लेडी, शी पब्लिश्ड द 4 वॉल्यूम्स. नतेशा शास्त्री, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी फोक टेल्स लिखनी शुरू कर दी थी. सो एज द national movements develop, nationalist leaders becomes more and more aware of such icons and the symbols in unifying people and inspiring in them
a feeling of nationalism. मतलब simply we can understand when the nationalist see the impacts of the icons. उन्होंने देखा कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने और ज़्यादा सिंबल क्रिएट करने की कोशिश की. जैसे ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट्स इन बंगाल, a flag was designed, and it was the flag of tricolor flag, red, green and yellow, and it had the 8 lotus representing the 8 provinces of ब्रिटिश इंडिया. मतलब उस समय देखो ब्रिटिशर्स की जो प्रोविंसेस थी वो 8 थी, तो उनको ये दिखाने की कोशिश की गई है 8 लोटस के थ्रू. ठीक है, और उसी फ्लैग के ऊपर एक क्रेसेंट मतलब हाफ मून दिखाया गया है, एंड प्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम. एक सन भी है, एक मून भी है. तो ये क्या क्या दिखा रहा है? इट शोड द यूनिटी एंड Muslim. You can see the picture of this image which was created. This flag was created in Bengal during the Swadeshi movements. So you can see in the green, the upper part with the 8 lotus flowers, and below in the red portion you can see the two symbols, crescent moon and the sun. It was the symbol of the Hindu Muslim unity. So this flag, sometimes the examiner can ask the simple questions in 1 marks. What were the color of the flags, to the tricolor of the flags which was designed during the Swadeshi movement in Bengal. So we can say the red, green and yellow. By the 1920, the Gandhiji had designed a Swadeshi flag. गांधी जी ने भी एक फ्लैग डिज़ाइन किया था, but the difference was there were no lotus flower and no moon and sun. There was just a spinning wheel in the center of this flag, and this spinning wheel in the center presenting the Gandhian ideology of self help. मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाओ, किसी दूसरे पर अदर ओरिएंटेड मत रहो, कुछ ऐसा काम सीखो जो दैट कैन क्रिएट सम एम्प्लॉयमेंट टू यू एंड यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट. तो ये वाला फ्लैग्स था, आप देख सकते हो इसमें सेंटर में स्पिनिंग व्हील एक चरखा दिखाया गया है. सो और इसके कलर भी कई बार पूछे जाते हैं, तो यू जस्ट मेमोराइज द रेड, green. These two colors are the same, just instead of the yellow the Gandhiji used the white. So you can see in the center there was a yellow and here is the white. So the another mean of creating a feeling of nationalism was through the reinterpretations of the history. Matlab it was the third way to create the nationalism or the sense of collective belongingness. Matlab the Britishers show Indians as a backward and the primitive. वो इंडियन को बैकवर्ड, प्रिमिटिव मतलब आदिम टाइप का समझते थे, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ. उनको ये लगता था कि हम खुद को गवर्न नहीं कर सकते, खुद को नहीं चला सकते. तो इसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स, Indian began looking into the past to discover the Indian great achievements. The Indian writer started to write about the Indians' achievement in the past, what we achieved. Like in astrology, we had done a good job. Astrology, yoga, dance, architectures, fort making, and so n number of things. But there was a problem whenever we try to find out our roots, the Rig Vedas and the literatures. मुस्लिम जो रिलीजन्स है ये बहुत बाद में आया, बाकी जो रिलीजन्स हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये भी बाद में आए. मतलब बट द सनातन, द हिंदूज वर एग्जिस्टेड द लॉन्ग बिफोर. सो जब इस हिस्ट्री को हम लिखने की कोशिश करते हैं तो द मोस्ट ऑफ पार्ट इज़ रिलेटेड टू द हिंदुइज़्म. थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि वाई वी आर जस्ट कलेक्टिंग द थिंग्स रिलेटेड टू द हिंदुइज़्म. बट ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है क्योंकि उस समय थे ही नहीं ये रिलीजन्स, तो हाउ कुड वी कलेक्ट द थिंग्स विच वर नॉट एग्जिस्टेड अर्लियर. तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था. अदरवाइज हमारा अच्छा पास था, अच्छी ग्लोरी थी, हमारी अचीवमेंट्स थी.
तो उनके बारे में जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने उनको रीडिस्कवर करना शुरू कर दिया और रिवाइव करना शुरू कर दिया, री इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया. And now the conclusion. This was the conclusion part of this chapters. So a growing anger against the colonial government was thus the bringing together various groups and the classes of India's into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. It means this is the things we have studied throughout the chapter कि जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही थी तो ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की जो एक फीलिंग्स थी वो भी इंक्रीज हो रही थी in mid 20s. And in the leadership, in the Congress, in the leadership of the Mahatma Gandhi tried to channelize the people's grievances and the organized movement for independence. मतलब we have studied that everybody was suffering from the colonial rules, and but they had their own notions to express their grievance. मतलब दुख तकलीफ होता है, अपने उस दुख तकलीफ को शो करने का सबके पास डिफरेंट डिफरेंट नोशंस था. तो उस समय गांधी जी ने उनको चैनलाइज करने की कोशिश की, एक जगह एक वे देने की कोशिश की. ठीक है, यही बताया गया है इस पूरे चैप्टर में. द मूवमेंट विद द वेरिड aspirations and expectations. We have discussed this. Everybody has their own notions and the own ideologies to participate in the movements. But the main thing is this, कि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने दे ट्राइड हार्ड सो दैट अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं किसी ग्रुप के लिए तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे ग्रुप की फीलिंग्स को हर्ट कर देंगे. वी ऑलवेज ट्राई टू लुक द मिडल वे, द मिड वे, सो दैट सभी ग्रुप को एक जगह यूनाइट करके रखा जा सके, कोई बीच का रास्ता निकाला. द कांग्रेस continuously attempts to resolve the differences and ensure that the demands of one group did not alienate others. मतलब ऐसा ना हो कि कोई दूसरा ग्रुप पीछे रह जाए या दे स्टार्ट थिंकिंग दैट वी आर जस्ट एलिनिएटेड, हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं करने की कोशिश की गई. सो दिस वाज अवर चैप्टर. आई थिंक यू हैव understood what I explained. If you have any doubt, you just comment me below this video. I'll send you the explanations. And there is the only one way to understand these chapters. See the video multiple times, 2-3 times, and you will memorize the whole chapters. Because to memorizing the question is not so easy, because the examiners can ask any kind of the questions. How many questions you are going to memorize? The simplest way to study a history is to study the chapter. Try to see videos multiple times so that you can memorize the whole story. You can see the video in parts, but when the chapter is complete, from one day sit quietly and in a fast way you can increase the speed and see the all chapters one time. एक साथ देखना है सारों को, so that the story can connect easily. So thank you very much, and if you have any doubt, let me know in the comment sections. I will reply you. Thank you very much.